Assalamu alaikum and welcome back to the DaniJ podcast. So today I have a very different guest with me. अगर आपके मेरे कोई ओजी पॉडकास्ट वॉचर्स हैं उनको पता होगा कि ये बंदा कौन है. He was part of the original four people जिससे ये पॉडकास्ट शुरू हुई थी. So I would like to welcome Hassan to the podcast here. Thank you so much for coming. Of course, brother. It's been a while. जो Ah, बात है भाई जो बात है एंड uh, अगेन मैं मैक जो है वो मेरा वहाँ है तो आई कैन सी हसन्स वीडियो देयर. तो अगर मैं टॉप राइट साइड पे देखूँ तो इट्स बेसिकली मी सीइंग हसन की वीडियो. ठीक है. yes. अच्छा. तो यार Uh, बेसिकली व्हाट हैव यू बीन अप टू सिंस इंसेप्शन. क्या कहते हैं पॉडकास्ट जो है वो एक हाइटेस में चला गया. ah, yes, bro. It's been a long time. क्या कोविड के टाइम पे शुरू किया था और I think that was the time जब सब हम क्या कहते हैं graduate वगैरह कर रहे थे from like high schools, finishing our A levels or stuff like that. तो I had applied for Germany bachelor's करने के लिए in environmental science and वही कोविड के दौरान ही क्या कहते हैं मैं निकला towards Germany, isolated in the dorms for like a week. And तो शुरू में वो जो होता है student life वाला सारा scene, freshies, party and all of that, that was sort of lacking. It's kind of disappointing in that sense. लेकिन हम्म. उसके अलावा it was a really enjoyable experience. And then here I was, when I was finishing my bachelor's, I also got a good opportunity कि मैं master's भी यहीं पे कर लूँ. Master's भी continue कर लिया. हम्म. And same city से in Germany. And then जब मास्टर्स ख़त्म होने लगा तो पीएचडी की ऑप्शन आ गई. And I was always interested in like academia and research and all of this. तो मैंने कहा चलो ये भी शुरू कर लेते हैं. And I think I'm in my second month of like starting my PhD now. और alhamdulillah वही चल रहा है for the next hopefully 2 years. क्या बात है भाई क्या बात है मतलब हाउ टाइम्स गो ना. मैं क्या कहते हैं आई हैव अभी तो डन माय बैचलर्स ओनली और तुम पीएचडी तक डायरेक्ट पहुंच गए हुए हो हैं. पार्ट ऑफ द रीज़न आई आल्सो से इसके क्योंकि जर्मनी का वो 3 साल का बैचलर्स होता है तो तुम्हारा वैसे ही एक हेड स्टार्ट था Exactly. देन माइन. और मैंने एक वो गैप ईयर भी लिया था. लेकिन खैर यार मुझे पहले ये बताते हो कि लाइक व्हाट डिड यू डू योर थोड़ा एक्सप्लेन करते हो कि व्हाट डिड यू डू योर बैचलर्स इन और फिर तुम अपना मास्टर्स में तुमने क्या फोकस किया और अब तुम Mhm. पीएचडी में अब क्या करना चाह रहे हो. Okay. Yeah. So bachelor's जो था कहते हैं it was kind of like काफ़ी generic environmental science में ना. But क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें पढ़ाई गई like from geophysics, geochemistry, geography, geology, sedimentology, volcanology, क्या कहते हैं इस तरह की. और of course field and lab experience भी थोड़ा बहुत, as in how do we take samples, rock samples, or how do we take sediment samples जब research vessels जाती हैं for scientific expeditions. How do we work on the ship, how do we process these data sets और वो सब. तो बैचलर्स में काफ़ी यानी कि एक तरह से जेनेरिक आपको ऑप्शंस मिलती हैं. दे टीच यू एवरीथिंग, दे bombard you with everything. और एक शुरू में इट वाज ऑफ कोर्स अ बिट चैलेंजिंग क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज अब्जॉर्ब करना एक बंदे के लिए ऑफ कोर्स it's a challenge in itself. ऊपर से हम्म. in Germany जब ये geosciences की जो field है, they generally also have very challenging courses themselves, right? It's known to be challenging, and that's why like थोड़ा बहुत if you do geosciences or from Germany, people are like, okay, he probably knows something, you know. हम्म. तो इस हिसाब से but like when I did this courses मेरा काफ़ी शौक गया towards like reconstructing past climate as well as geochemistry as a side, a chemistry की side, like of course analyzing different samples and looking at their chemistry and using that chemistry to then be able to understand what happened in the past एक तरह से.
and ताकि हम क्योंकि with all climate change, global warming and everything, and to understand how things will react in the future. So that was sort of like that was really interesting for me. तो बैचलर्स में मैंने थोड़ा बहुत उस पर फोकस किया, बट देन जब मैं मास्टर्स की तरफ किया तो आई वांटेड टू डाइव डीपर इनटू दिस जियोकेमिस्ट्री साइड ऑफ थिंग्स, राइट। उसमें आ जाती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों। और आई टोल्ड माई सुपरवाइज़र कि मेरा जो शौक है, लाइक मैं ना ऑर्गेनिक को छोड़ सकता हूँ ना इनऑर्गेनिक को छोड़ सकता हूँ, सो आई नीड समथिंग दैट कंबाइंस द टू। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं टॉपिक दिया, जिसमें मैं मल्टीपल डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके and I can make a story of, like, basically it was so cool, that I got the opportunity to do this. But you know how Iceland was first colonized by Vikings, right? They were the first people who came there. तो हमारे केमिस्ट्री जब हम देखते थे उस एरिया की, तो वी वर लाइक समथिंग्स फिशी, इट सीम्स लाइक जो हमारे पास टाइमलाइन है उनके आने की, इट्स नॉट दैट एक्यूरेट. So my basically thesis was sort of combining these inorganic, organic, and different imaging techniques to basically see if they actually did arrive earlier. So okay, एक तरह से कह लो archaeology और क्या कहते हैं geosciences और past reconstructions, it all merged together into this really cool project. और फिर since my interest got into this like combined reconstruction of the past, उस टॉपिक के हिसाब से कहते हैं there's this like big working group जो है imaging, we call it imaging but it's not exactly just taking a picture with a camera. imaging methods हैं ये. तो उसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ था. And my supervisor told me that there's this professor who was working here as well, and now he went all the way to this institute near Frankfurt. If you want to apply for that PhD position, it's kind of similar to what you are doing right now, and you will have a jump start. You have an advantage. Topic जो है वो काफ़ी open-ended है, and if you want to go for it, go for it. Or then I applied, और अब अभी तो मैं मिक्स कर रहा हूँ काफ़ी चीज़ें. Like there is no exact topic, which is a good thing. Supervisor ने कहा हुआ है कि like देखो टॉपिक जो है अब अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेना. First get a grip of like what options we have available here, और क्या आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है. तो in that sense अभी तक there is no exact thing that I'm doing, but ये मेन चीज़ जो है जिसका मैं एक तरह से कह लो यहाँ पे सुपरवाइज़र नहीं but like professional यहाँ हूँ, is for hyperspectral imaging technique. तो उसके लिए मैं उस पर मैं different चीज़ें limitations उसकी टेस्ट कर रहा हूँ, and I just testing random shit with that. सही है यार, वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, और तुमने मतलब कि इन कॉन्वर्सेशंस तुम्हारे से वैसे प्राइवेटली तो तुम बताते रहते हो अबाउट द रिसर्च दैट यू हैव बीन डूइंग. कुछ रिसर्च गोज ओवर माय हेड, लेकिन आई मीन दैट्स अंडरस्टैंडेबल आई गेस. अच्छा जी, अनदर कट आई नो. अब तो आपको मतलब कि यूज्ड टू हो जाना चाहिए जितने कट्स होते हैं इस पॉडकास्ट में. मेरा कोई मसले थे, ठीक है. अच्छा, तो बेसिकली हसन यार, वीवर एट के पीएचडी की तुम्हारी बात हो रही थी. तो Mm-hmm. व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू इज़ के अब तो तुम्हारी एक तुम पीएचडी कैंडिडेट हो एंड इट्स बीन 2 months इनटू योर पीएचडी. एक Mm-hmm. तो कैन यू टेल मी कि हाउ मतलब हार्ड द पीएचडी इज गोइंग टू गेट द फर्दर यू गो इन. और दूसरा ये कि मतलब कि डूइंग अ पीएचडी इज मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक बहुत एक अच्छी अचीवमेंट है, बिकॉज यू आर गोइंग टू डू समथिंग जिसमें कोई रिसर्च नहीं है. तुम बेसिकली नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है. Mm-hmm. तो मुझे ये बताते हो कि हाउ डिफरेंट इज़ अ पीएचडी अगेंस्ट जो तुम मास्टर्स या बैचलर्स करते हो. Mm-hmm. तो पहली बात कि लाइक हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट गोना गेट, उस हिसाब से हम्म. तो अभी तक थोड़ा मैं और एक और पीएचडी कैंडिडेट है यहाँ पे, लाइक मेरी कॉलीग, वी स्टार्टेड अलोंग द सेम टाइम.
तो हम दोनों काफ़ी अभी थोड़े टेंस हुए हुए हैं, बिकॉज द थिंग इज़ टू बी एबल टू ग्रेजुएट एज लाइक अ पीएचडी स्टूडेंट हमने 3 पब्लिकेशंस करनी है। एंड इट्स नॉट जस्ट के 3 पेपर्स आपके सबमिटेड हों या कहते हैं इन प्रोसेस हों, नो, 3 एक्सेप्टेड पेपर्स। एंड थिंग इज़ ओके। आप देखो काफ़ी इट टेक्स, पहले आपने पूरा उसको उसका लिखना है एंड एवरीथिंग, उसका सारा जो बैकग्राउंड काम है, रिजल्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो लिखना है। एंड देन यू हैव टू सबमिट इट एंड देन देयर इज़ अ वेटिंग टाइम फॉर इट टू बी रिव्यूड। फिर रिव्यूअर्स कुछ काफ़ी, यू नो, I don't know if anyone is in academia, there's always this meme going about reviewer 2. Reviewer 2 is always and very annoying, and हम्म। he was never satisfied, and that's why you have to keep revising and keep revising. Or इस हिसाब से like it's 3 years and 3 papers. So इस हिसाब से like there अच्छा। is not a lot of time. It seems like कि आपके पास बहुत ज़्यादा time है, हम्म। but उस हिसाब से अभी like इसलिए you have to like in your first couple of months have a clear idea कि किस timeline पे मैंने ये कितनी ये publications किस तरह करनी है, right? ओके। So that has to be definitely a priority. Or by the end of the first year, you should 100% have a plan about all 3 of those, ताकि आप ओके। उस पर फिर काम कर सको and everything. So like ठीक in है। comparison to like masters and bachelors, the thing is like PhD जो है, it's basically यहाँ पे it's just a job, right? So like you work from 9 to 5. You have no homework, you have no assignments, ठीक है? You have no exams per se. तो उस हिसाब से लाइक इट्स अ वेरी स्मूथ स्केड्यूल। यू गो टू वर्क एट 9, ऑफिस में जाओ, लैब में जाओ, अपना काम वगैरह करो, कम होम लाइक अराउंड 4 or 5, एंड देन दैट्स इट, यू हैव द रेस्ट ऑफ द टाइम क्वाइट फ्री, यू नो, इस हिसाब से। वेर एज मास्टर्स बैचलर्स में क्या होता था, यार वो असाइनमेंट ही हुआ है, यार ये एग्ज़ाम आने वाला है, ओ नो इतने क्रेडिट्स पूरे नहीं हुए, उतने क्रेडिट्स नहीं पूरे हुए, उस चीज़ की टेंशन जो है वो भी नहीं। एंड देन even in masters, there were these courses that you just had to take for the sake of credits, right? आपने अपने credits पूरे करने हैं, you have to take this random course on like, I don't know, culture and society, you know, I don't हम्म। know what options you have. तो उस हिसाब से कहते हैं there is no such thing here. आपका जो इंटरेस्ट है, लाइक ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स, क्योंकि एटलीस्ट पर्सनली मेरा ये है कि लाइक जिस पीएचडी में मैं लैंड अप हुआ हूँ, it's exactly what I like, it's what I want. तो it doesn't feel that stressful. बस अगर आपको डेडलाइंस वगैरह ये सब मैनेज करना आता है, other than that there is no like, oh, I have to, you know, worry about modules and courses and all of that stuff. So इस हम्म। तरह से वो different है. It is more difficult, but it is, I think, more rewarding and more satisfying if you get into the flow of doing it. सही है, सही है। और तुम कह रहे हो कि जो पीएचडी है तुम्हारी, दैट इज 2 इयर्स, राइट? With 3 years. अच्छा, 3 इयर्स। अच्छा, 3 इयर्स इज स्टिल नॉट अ लॉट। वैसे अगर तुम यू कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज तो दे आर नॉर्मली 4 या 5 इयर्स। डू यू थिंक कि जर्मनी क्या कोई एक लिमिट लगाता है ऑन पीएचडीज, या सिर्फ बिकॉज ऑफ योर फील्ड एक सॉर्ट ऑफ है कि 3 इयर्स में ही आपने कंप्लीट करनी है? व्हाट इज दैट अबाउट? हाँ, so basically it depends on like funding पे, right? So हम्म। like जो भी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी रिसर्च फंड कर रही है, some only fund for a year, some fund for 3 years, and they're like no more than that, and some are like, oh, okay, if it, we would prefer 3 years, but then okay, plus minus you know, half a year or something is possible. हम्म। So it differs from like topic to topic, position to position. It's very variable. It's just that mine is like for 3 years, but and that is also the generally accepted term. जितने भी मैंने PhD applications देखी थी, हम्म। at least in Germany, Netherlands, Switzerland, Belgium, surrounding Germany countries, and maybe it was mostly around 3 years as well. राइट, राइट। नाइस। इंटरेस्टिंग। अच्छा, सो आई वांट टू टेक यू बैक, ठीक है, थोड़ा सा बिफोर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। uh, जो मैं नॉर्मली अपने गेस्ट से पूछता हूँ कि हाउ वाज योर लाइक अर्ली लाइफ, लाइक तुम किधर पैदा हुए, एंड हाउ वाज लाइक योर अर्ली एजुकेशन लाइक? Right. So I was born in Qatar, like
and I spent almost my entire life there. So in terms of like how it was like quite nice क्योंकि शुरू से ही it was like in Qatar it was a very international community, right? So it was not like just, and I was also not in a school where it was just like there's a lot of schools where it's just Pakistan, mostly Pakistani people or something like that, right? In the Middle East, there are a lot of those options, but fortunately, my parents were like, yeah, put him in an international setting. You learn more about cultures and people, and it's just like nice to get out of like just everyone having the same cultural input and everything, right? तो इस हिसाब से that had a great impact on me like later on in my life as well. So for my early education, that's how it went, and then फिर क्या then just general schooling and stuff and some sports here and there, just the classic, up until of course O levels and stuff. But Mm. that's where things got a bit dicey. There was this interesting situation. I don't know, most people might not remember it, but like back in, I think it should be 2016 or something, there was this big dispute between Qatar and its neighboring country, Saudi and Emirat, and there were some issues, right? Some political issues between them, and so my dad looked at me and my two older sisters, and he was like, "Look, if something happens and we instantly have to rush back to Pakistan or something, it's just safer that your education is not interrupted. So how about you guys go to Pakistan, and so that you don't have to drop, for my sisters, you don't have to drop out in the middle of your university, or for me, you don't have to, just drop out in the middle of your O levels." So that's why then we moved to Pakistan. मेरा तब कहते हैं, आई थिंक मैं 1 साल हो चुका था बल्कि GCSEs के लिए ना मेरा, अच्छा. और मेरी दोनों sisters, they got one, I think, ended up at yours truly. क्या एट फास्ट? क्या Yes. बात है. And the second one went for LUMS. और अच्छा. मेरा मैं उधर गया, and I was disappointed. They were like, आपने ना इस्लामियात पढ़ी हुई है, ना आपने पाक स्टडीज़ पढ़ी हुई है, ना आपने उर्दू पढ़ी हुई है, डाउन 1 ईयर। तो मेरी अच्छा. सारी जो GCSE से जो मैंने पहले साल किया था, कहते हैं एटलीस्ट इन कतर, हम्म. all gone to waste. आई मीन यार, क्योंकि भाई इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज इज कंपल्सरी अनफॉर्चुनेटली, तो वो फिर है आपका एक चीज. हाँ एग्जैक्टली, तो उस हिसाब से, but and I think I was so lucky. I always still remember, okay, I got into the class and section that I managed to get into, where I met Uzair and Ali, some of our older co-hosts back in the days, if you guys still remember. And initially I was of course always very frightened, you can say, okay, like what's gonna happen, oh my god, I don't know how to deal with people and everything. And then of course the claims of burger boy because I was not used to like speaking Urdu at all, ठीक है, हम्म. because of being in that international setting all this time. घर पे भी थोड़ी बहुत बोलते थे, but then also it was mostly this mix and mostly English leaning, right? तो and then when I got there, पहले तो मेरी सही धुलाई हुई कि हाँ भाई उर्दू में बकवास करो प्लीज, ठीक है. हाँ. But they helped me settle in so nicely. Everyone was so nice. They me in so many different ways. मुझे कभी feel ही नहीं हुआ कि like, for me it was like leaving behind my entire life, right? Everything I had ever known for 16 years of my life just left behind. उसके अलावा पाकिस्तान में भी हम आए लाहौर में, right? एंड आई एम नॉट ओरिजिनली फ्रॉम लाहौर, तो जब भी हम अपने कजन्स वगैरह या रिलेटिव्स को विजिट करने जाते थे, वी वुड नॉट बी कमिंग टू लाहौर. तो इट वाज अ टोटली न्यू सिटी एज वेल फॉर मी, एंड उस हिसाब से they, like my batchmates and everything, were really helpful, and that's how I made some, I would like to say, lifelong friends, and you can truly count on. And through Uzair is how I met Daniel. And that story is, I think, one of the craziest stories ever. हाँ. I think इसी तरह के, I think, स्कूल से फारिग हुए थे हम,
And Uzair was like, we let's go. I think the both craze tha like to go to gaming zones and everything. And हाँ, Uzair उस himself वक़्त obviously आई मीन उस वक़्त हाँ, अभी भी था और आई थिंक उस वक़्त एक्लेक्टिक वाइब्रेशंस भी होता था, लेकिन वो होता था eclectic उधर vibration. मस्जिद चौक में होता था। Exactly, हाँ। तो आई थिंक ये फेज़ 4 में एक जगह थी जहाँ पे हम गए। उज़ैर मैं मुझे तो सिर्फ उज़ैर को जानता था एंड ही वाज लाइक दोस्त भी आ रहा है एक साथ, सो तब हमारी थोड़ी बहुत ऐसी बातचीत हुई व्हाइल वी वर गेमिंग एंड एवरीथिंग। बट देन फिर हम निकले एंड प्लान था कुछ खाएं पिएं एंड उज़ैर इज़ लाइक अच्छा बॉयज़ आप लोग खाओ पियो मैं चलता हूँ। हम एक दूसरे की शक्ल देख आई डोंट नो हिम, ही डजंट नो मी हाँ। एंड जो कॉमन फ्रेंड है ही इज़ लाइक अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, नहीं, एक मुझे याद पड़ता है उसने कहा था मेरी अम्मी मुझे घर बुला रही हैं, मैं जा रहा हूँ, हाँ, तुम या दोनों बात करो। ठीक है यार, मतलब कि हम दोनों जाते नहीं है, बस करो बात। एग्ज़ैक्टली एंड देन बिल्कुल था नहीं एंड देन दैट्स व्हेन वी बॉन्डेड, ट्रूली बॉन्डेड। हुँ, हाँ। बट या उस हिसाब से लाइक आई थिंक जो पाकिस्तान में एजुकेशन टाइम था लाइक इट वाज मोस्टली जस्ट लाइक अ ब्लर टू मी क्योंकि आई थिंक या 4 years थे। बट नाउ व्हेन आई थिंक बैक टू इट इट वाज आई थिंक some of the best 4 years of my life, especially because of the people I met, and they never made me, other than like burger boy wali jokes aside, they never हुँ, made me feel like out of place. I felt really welcome and stuff. So that was quite nice. Up here and pay COVID and then you know the rest. अ, नाइस, नाइस। इंटरेस्टिंग यार मैंने ये एक थोड़ा वांटेड टू एक्सपैंड ऑन कि तुम कदर में पैदा हुए और फिर यू स्पेंट बेसिकली योर नर्सरी टिल योर तुम कह रहे थे फर्स्ट ईयर ऑफ जीसीएसई राइट? Yeah. हाँ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ अब आई मीन दैट feels like you would as qualify as an OSP ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि तुम फिर वापस बेसिकली आ रहे हो पाकिस्तान तो Mhm. वो जो एक शिफ्ट था और जो मतलब इनिशियल इम्प्रे तुम्हें तो आई मीन आई गेस पता ही होगा कि किस तरह होते हैं पाकिस्तानी क्योंकि कतर में वैसे ही बहुत बड़ी कम्युनिटी जैसे तुमने कहा था लेकिन Mhm. एक्चुअली कमिंग टू द कंट्री और फिर उसके हालात देखकर लोग देख के वो लाइक हाउ वाज दैट शिफ्ट फॉर यू एज एन Mm. ओएसपी? I think this is a very common trend. जो overseas Pakistani काफी they're like they काफी stereotypes, पहली बात let me make it clear, काफी मेरे stereotypes about Pakistan were broken, ठीक है, in a good way for Pakistan, क्योंकि overseas पाकिस्तानी ऐसे एक्ट करते हैं जैसे पता नहीं क्या कुछ भी नहीं मिलता उधर, like it's just trash, कोई जाने का फायदा नहीं, बस relatives हैं उनसे ही मिलने जाते हैं सिर्फ, you know, there's a lot of people who have this mindset and I'm like that was not at all the case. It was so beautiful, firstly, initially, for me. And I know that there are concerns, but आप कहते हैं उधर रह के like be concerns. There's concerns everywhere. There are issues everywhere, right? And each country has their own issues to deal with. Yes, I might have others, but जिस तरह like वो बात करते हैं ना, it's like hell to go there. Like it's a मजबूरी के उधर जाना पड़ता है रिलेटिव से मिलना. That's how a lot of people talk about it. And so काफी time से like that's sort of what I thought, like oh I was initially very frightened, and then when I landed, I'm like, huh? Where's all of this? Where's the person coming and beating me in the middle of the road? Where is he? You know, I, where's like the lack of water and everything? I know, like, of course, there was still a lot of privilege in certain areas like DH and all that. So I'm not gonna say, like, that's the case, but still, like, a lot of those stereotypes were definitely broken for me. And in terms of the shift, I think the most important thing that everyone, first of all, experiences is the change in currency. You cannot comprehend what क्या कहते हैं, expensive or cheap is. Like I think it's on my first day, I wanted to go out and get some snacks, and my mom was like, "Okay, go ahead." And I was like, "Mom, mom, मेरे पास कहते हैं ना 3,000 हैं, इसमें chips आ जाएंगे?" And she's just like, "Brother, brother."
हाँ, So स it was like वो that total lack of understanding. वो of course definitely मेरे अंदर थी शुरू में, but I think within the first month वो काफी easily like it got adjusted and हुँ, became somewhat more normal. सही, सही, वेरी इंटरेस्टिंग। ख़ैर अ, इट फील्स लाइक कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर अ बिट अकोमोडेटिंग टू यू, और तेरा एक जो शिफ्ट है उसमें हाँ उस इंटीग्रेट करने के लिए तुम इट वाज़ ईज़ी फॉर यू। अब क्या कहते हैं यू देन हमें तो स्टोरी पता ही है, ये कोविड में यू वेंट टू जर्मनी और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री ऑब्वियसली। मुझे ये ज़रा बताते हो कि ड्यूरिंग अभी जो आई गेस अगर आप हालात पता हैं तो अभी जो ईरान वॉर चल रही है आपकी बेसिकली विद द यूएस एंड इसराइल, और साथ लेबनान भी है, वो इसराइल उनको भी अटैक कर रहा है। तो व्हाट हैज़ दैट जो वॉर हैव एन इफेक्ट ऑन योर फैमिली, क्योंकि अब आई थिंक इज योर फैमिली स्टिल यहाँ पाकिस्तान में या आर दे बैक इन कतर, उनका क्या सीन है अभी? So they've been in Qatar this entire time, right? My ओके। dad works there, so my mom and dad दोनों कतर में ही होते हैं. हम्म। And the thing is कि अभी recently the moment I think this war started, उससे पहले का मेरा थोड़ा बहुत प्लान था कि एक दफ़ा मैं अपना PhD में थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ, तो I had to go back to Qatar to renew my residence in Qatar. और जब मेरा प्लान बन रहा था and then all of this started, and initially I was like, okay, I was not immediately that impacted, but in terms of क्या कहते हैं, everyone over there, of course, mom and dad, like it was were initially, of course, quite a bit scared. More हम्म। so my mom, and she was just like, stay inside, everyone stay inside. You're not going out. कोविड एरा शुरू हो गया दोबारा से। Go ahead. Stay away from the windows, stay away from the doors, and देन फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को क्या कहते हैं जो कतर में हैं, उनको मैंने मैसेज किया कि लाइक हाँ भाई यार क्या सीन है, लाइक सुनने में आ रहा है, लाइक मेरा प्लान बन रहा था आने का, सो व्हाट्स हैपनिंग। उन्होंने कहा यार हसन यार, मैं बताता हूँ यार, देखो हम जो है ना रात को बैठते हैं, थोड़ी चाय पकड़ते हैं और बस हवा में फायर वर्क जो हो रहा है बस इंजॉय करते हैं। दिस लैक ऑफ माइंड, दिस डिफरेंस इन माइंडसेट, राइट? हम्म। Like, but then again, I think उसमें ये आता है, the reason why most of the people were like, of course डर होता है एक, like because of course even debris was still falling from the intercepts and everything, but everyone knew that they were not sort of the targets, right? तो उस हिसाब से एक तरह से थोड़ा बहुत ये था कि okay, it's not that our there's going to be like a whole barrage coming to our like housing and stuff like that. It was mostly like critical infrastructure apparently that was being targeted and stuff, right? उस हिसाब से, हम्म। so most of the people who were at home were sort of safe. I was more worried for like the safety of my dad in that sense. Okay, he works in the petrochemical oil gas sort of industry, हाँ, and they were kind of the targets in a way, हाँ, like वो बहुत हाई रिस्क होता है आई गेस, वो फिर प्रिकॉशन जाहिर सी बात है लिए होंगे उन्होंने उस कार्ड में। exactly. So उस हिसाब से like I would daily talk to my dad and he was like, ah yeah, there was something like in like a neighboring region, a neighboring industry area that hit, and he was like, uh, according to what information has been given to our managers and stuff, like, and like not managers but like CEOs and stuff, it should be fine. But even then I was like, no, you sit home, you don't go to work. हम्म। Yeah. And then I think a similar crisis जब COVID शुरू हुआ था of like water, क्योंकि like the thing is कि ये सारी जो countries हैं they rely a lot on desalination supplies, right? Desalinated water जो है makes up a majority of the drinkable water in the region. तो इस हिसाब से there was I think a lot of like stocking water. Remember, like जब कोविड शुरू में हुआ था, like water disappeared and all of these like different things like tissue paper, toilet paper in America and stuff like that.
that sort of stuff sort of started to disappear. But then I think the Qatar Ministry of Interior and all of that, they were very good at managing this entire crisis in terms of just ensuring, letting everyone know कि like look, हमारे पास 1-2 साल के stocks हैं for all of these things. Do not panic buy everything. Please do not panic buy everything. उस हिसाब से काफ़ी मैनेजमेंट हो गई थी. And then eventually, like I think after, I think it lasted for like more than 2 weeks, like where it was like continuous, like barrages coming every day. And then like even then, mom used to tell me, when I would call her, I would be like, how was it today? And she was like, हाँ ज़्यादा नहीं, आज बस सिर्फ 1-2 इंटरसेप्ट हुए थे. It was normal. So it was kind of very scary, of course, because I'm all the way over here in Germany, right? So I'm always worried, like, okay, what if something happens? What if something happens? What if something happens? And so that, of course, it stayed the entire time, and so we made sure that regularly कहते हैं, in touch, trying to make sure that everything is fine and everything is okay with them, everyone's safe. तो उस हिसाब से. And then I think the ceasefire announcement came out, and I was like, okay, now's my chance. Instantly मैंने टिकट बाय किया. And जो टाइमिंग बन रहे थे, मुझे ये मिली कहते हैं फ्रॉम माई सुपरवाइजर, उसके हिसाब से मैं प्लान किया. एंड देन आई वॉज वरीड अगेन, क्योंकि द डे माई रिटर्न फ्लाइट was क्या कहते हैं a couple days after the official ceasefire date. And I was like, oh my god, if they start again, that's it, I'm stuck here. I'm gonna lose my PhD as well, Mm-hmm. and like everything's gonna go crazy, right? But Uh, alhamdulillah, that didn't happen. लेकिन इस हिसाब से आई थिंक जो एयरपोर्ट पे मैंने हाल देखा, एटलीस्ट कहते हैं यूरोप एयरपोर्ट पे इट वाज लाइक normal, right? But when I landed in Qatar, it reminded me literally of like the COVID era. Empty, not a single soul. Everyone was, and I think the flight was also entirely empty. Itni empty that like everyone in the flight had a window seat, and those were the only ones filled. अच्छा, And डैम यार. I was like, okay, लोग जो इनके बीच में सब लेटे हुए हैं अपने because you had like 3 seats to yourself, might as well हाँ, just तो lie down. हाँ, एग्जैक्टली. Yeah. And then when I landed, everyone on the flight went towards the transfer side. मैं अकेला बंदा था जो क्या कहते हैं चलता हुआ कहते हैं. It was so dystopian. It felt so weird. क्या कहते हैं मैं एक बंदा हूँ, empty airport, going towards क्या कहते हैं the baggage claim and everything. And कहते हैं जो cleaning staff and all of them, they were looking at me like, is this guy going the right way? Does he know? Maybe he's lost or something. एक बंदे ने मुझसे पूछा भी like, the transfers are that direction. I'm like, no, this is my final destination. Literally no one was arriving at the airport when I arrived. I had the entire airport to myself. I don't think I can ever say that ever in my life again. But I think everything went safely. I managed to process everything, and yeah, I came back. But as I say, I think there's still a lot of like tension, of course, rising in the region, and yeah, we can always hope and pray for the best. जो बात है, होप एंड प्रे फॉर बेटर सेंस एंड होप फॉर एंड प्रे फॉर कि नेगोशिएशंस, जो भी नेगोशिएशंस होती हैं बिटवीन द कंट्रीज, दे कम टू गुड लॉजिकल एंड Exactly. विद लेस कैजुअलिटीज फॉर बोथ साइड्स, इंशाल्लाह. Inshallah. यार, आई वांट टू गो अ बिट फर्दर बैक बिफोर मैं आई डाइव इनटू के यू अराइविंग इन जर्मनी और वो सारा मैं एक्सप्लोर करूं. जो अब तुमने जैसे बताया ना कि योर फादर वर्क्स इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, राइट? तो उनका जो है वो, आई मीन जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं और फिर वो कतर आए थे फॉर वर्क. Exactly. हाँ. तो वो, अगर तुम्हारी उनसे बात हुई है, उनकी क्या जर्नी थी फ्रॉम पाकिस्तान कमिंग टू कतर और फिर रेजिंग अ फैमिली एंड देन हैविंग यू, वो उनका कैसा Mhm. एक्सपीरियंस था? Oh, I think his experience was quite interesting as well. Because I think my grandfather, he was like in the military, अच्छा. so like Air Force, I think.
I think. I'm sorry, I don't know. But so वो your military upbringing, you know how it is, and then like of course posting वगैरह everywhere, all of that stuff. So he was never. Sometimes he's in Karachi, sometimes Sadqabad, sometimes Kohat, Multan, all over Pakistan and everything. And so he was working at his company, and then like he got this offer. Like I think my both my sisters were born in Pakistan first, right? And then I think late 1990s में क्या कहते हैं he got this like really nice offer from the company that he's currently working at. It's been the same company since day one, and अच्छा, he thought about it. The interesting thing is, my dad himself wanted to apply for to be in the Air Force, but he had one eye, or I think both eyes or something, but 0.25 yeah 0.5 was अच्छा, negative in his sight, and that's it. You can no longer apply. Right, to be a oh, pilot, it's very strict. You need perfect 6 by 6. I don't know if things have changed now, but like at least when my dad he wanted to be a fighter pilot, and like he was very distraught. And around the same time when he got like rejected to be a pilot because of that small difference, he got this opportunity, and he was like, "This looks really nice," but no one knew of Qatar up until क्या कहते हैं, FIFA 2022. No one, even then, people in the 21st century didn't know what Qatar was most of the time. जब भी मैं उन्हें बताता था, you always had to tell, हाँ वो सऊदी अरेबिया के साथ जो कहते हैं country है. mm, So at that point, especially in late 1990s, no one definitely knew and like Qatar kya hai. And then he was like, "Oh, okay, it looks like a really nice opportunity." He talked to his dad, and then like talked to my mom as well. And then they decided, okay, you know what? It looks like a really good opportunity, and they offer family support. The company, they're like, okay, once you arrive, you can bring your family in. And mm, so he came, and then I think 2 years later, my mother with my two sisters also came to Qatar, and then I think a year later I was born or something. but Uh, that was like no, a crazy shift. And he always tells stories of back in the day, like now you see Qatar and there's like these massive skylines, these resorts, so luxury, and all of that. But he's like, none of that existed. None of it was there. It was quite barren and stuff. And then there were some things here and there that you could do to enjoy. But so basically, my dad and my mom saw this entire shift from being like a small country to like this amazing, beautiful infrastructure everywhere. They saw the entire change in that sense. मैं लाइक ड्यूरिंग माय ट्रैवल्स मैंने दोहा एयरपोर्ट मेरा एज अ ट्रांजिट था और दोहा एयरपोर्ट देख के मतलब मेरा दिमाग फट गया भाई मतलब कि एयरपोर्ट के अंदर आपकी वो चल रही है मेट्रो कहते हैं आई थिंक सो हाँ ट्रैम चल ट्रैम रही है. यस हाँ, ट्रैम चल रही है, ठीक है? व्हिच कनेक्ट्स द 2 टर्मिनल्स मतलब कि कमाल ठीक Yeah. है? और फिर उनकी जो अट्रैक्शंस हैं द येलो बेयर और Uh, अम, द गार्डन जो उन्होंने गार्डन तो नहीं, फॉरेस्ट आई और थिंक उसका नाम है ऑर्चर्ड्स. ऑर्चर्ड्स यस द ऑर्चर्ड्स वो मतलब कि यार उन्होंने मतलब कमाल किया है विथ द मनी दे हैव हैड उन्होंने क्या से क्या कर लिया लाइक आई मीन कुडोस टू देम बेसिकली तो हाँ अदरवाइज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी तुम्हारी और मतलब उन्होंने किस तरह किया और यू वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट लेकिन यार आई मीन अल्लाह जो है एक दरवाजा खोलता है तो दूसरे सॉरी गलत बोल गया एक दरवाजा खोलता है. एक दरवाजा बंद करता है दूसरा दरवाजा खोलता है ये दैट्स व्हाट That's the exact same phrase जो मेरे दादा ने मेरे पापा को कहा था, and literally I think it was literally days later जब उनको ये ऑफर लेटर आया था. अच्छा And नाइस यार वेरी नाइस so coming back to a present day, like it has been 6 years since you have been in Germany, mashallah se. हाँ, in September October मुझे 6 years हो जाएंगे.
हाँ, ठीक है। तो यार मुझे ये ज़रा बताओ कि आई मीन ज़ाहिर-सी बात है कि इट्स हार्ड टू गो टू अ कंप्लीटली न्यू कंट्री, बी ऑल अलोन, खुद ही चीज़ें अपनी मैनेज करना, हम्म, फाइनेंशियली जो आपके मतलब लॉ के साथ जो भी ताल्लुकात हैं, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, टीचर्स, व्हाटएवर यू हैव टू डू इट, ठीक है? हम्म, उसमें जो तुम्हारी लाइक इनिशियल जो डिफ़िकल्टी हुई थी और फिर ज़ाहिर-सी बात है वन गेट्स होमसिक, टॉक मी थ्रू वो तुम्हारा जो एक इनिशियल एक्सपीरियंस था फ्रॉम गोइंग टू हियर इन मतलब कि तुमने आई गेस ए लेवल्स तो किया नहीं, यू डिड इंटरनेशनल बैकलॉरेट और फिर तुम हम्म, यहाँ से फिर जर्मनी गए थे। सो टॉक मी थ्रू हम्म, के एक इनिशियल जो तुम्हें डिफ़िकल्टी हुई थी इन नेविगेटिंग अ न्यू कंट्री एज़ जर्मनी? हम्म। हाँ, ऑफ कोर्स लाइक शुरू में देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, challenges वगैरह होते हैं, like you don't understand anything about the system initially, right? And then there's the language barrier and all of that. But I think it's just कि that time period is a blur for me. क्योंकि जब आप आते हो you're just like some people might be scared, but मैं अपना personal experience से कह रहा हूँ कि like I was super excited, right? इतनी ज़्यादा excitement थी कि like अच्छा वो नहीं समझ आया, okay कुछ खराब हो गया, okay कोई नहीं, like you're just so excited that you forget almost all of these bad things, right? और जब हुँ, and then while you're still learning and absorbing things, और कहते हैं जब महीना कहते हैं दो, जो कहते हैं मेरी एक्साइटमेंट जब तक रही तब तक आई हैड ऑलरेडी लर्न अ बंच ऑफ थिंग्स, एंड हुँ, उसी एक्साइटमेंट में यानी कि वो जो चैलेंजिंग पीरियड है ना, एट लीस्ट फॉर मी, वो ख़त्म हो गया था. आई एंड आई ओके, ऑल्सो वाज लकी इनफ टू हैव सम गुड फ्रेंड्स हियर हु taught me a bunch of things, like you know, तो उस हिसाब से भी it was good. तो आई don't think I ever got that homesick feeling initially, but अच्छा, now that I think back on it, I'm like, how did that work? But because क्योंकि now it feels unnatural to think about it, but it's just कि वो जो excitement होती है ना आपकी, that can carry you very far. And I think I have a really good example, like my brother-in-law, he recently क्या कहते हैं, also came to Germany, and he had the exact same experience as well. It was like शुरू में, like of course my sister was there to guide him a bit as well, but he was so excited that all of these things were like, you know, not relevant. But then he's like, अब जब मैं पाकिस्तान से होके वापस अब जर्मनी आया हूँ एक चक्कर लगा के, now I miss the things I had back there, क्योंकि अब वो फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम वाली एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है. And then that's when you feel all of the things that you had, like, I mean, क्या चीज़ है, like I think the thing that most people struggle with is like at least the language barrier, or दूसरा of course being with your parents and your family all together. Well, of course you miss your parents always, right? तो वो वाला पार्ट जो है of course अब ज़्यादा फील होता है, बट शुरू में सारा एक्साइटमेंट में बंदा एक तरह से इग्नोर करके भूल जाता है. हुँ, सही हो गया, सही हो गया। तो आई मीन जो तुम्हारा इनिशियल जो तुम्हारा था टाइम ऑफ कमिंग टू जर्मनी, तो उसमें तो तुम जैसे कह रहे हो ना कि तुम्हें इनिशियली वो लैंग्वेज जो बैरियर है वो उससे यू हैड सम डिफ़िकल्टी, जो तुम्हें वहाँ यूनिवर्सिटी और जनरली जो वहाँ आउटसाइड द यूनिवर्सिटी जो जर्मन लोग थे, हम्म, यंग या ओल्ड, यू कैन मतलब डिफरेंशिएट कि उनकी वो किस तरह के थे, लाइक वर दे हेल्पफुल या रिसेप्टिव, कि अगर ये इफ़ यू डिड नॉट नो जर्मन तो तुम अगर इंग्लिश में बोल रहे हो तो दे वुड हेल्प यू टू डू समथिंग या इस तरह? हम्म. वही तो, आई थिंक क्योंकि अगर आप स्टूडेंट सिटी वगैरह में जाते हो, यहाँ रीजन वेयर लाइक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टूडेंट्स, तो मोस्ट पीपल आर एक्सेप्टिंग अबाउट इट, ठीक है. लाइक आई नो देर इज a lot of people who have had bad experience with it, or like a lot of people they're like, no, we just speak German to me. And I also have had some weird experiences, but I understand it, right? Like in personally मेरा इस तरह कुछ बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा. आई थिंक द वर्स्ट वुड बी कि मैं इंग्लिश में बात करूँगा एंड दे विल बी लाइक ओके, और फिर जर्मन में कुछ बोलेंगे, एंड देन आई विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट, बट दे विल नॉट बी लाइक एक्सप्लिसिटली रूड. और हुँ, दूसरा कहते हैं वो चीज़ है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ जर्मनी पीपल. नॉर्थ वाले जो हैं, देर अ बिट मोर कोल्ड, कहते हैं लोग,
they're like just straight to the point, okay, straight face, and just ऐसी zombie की तरह हरकत करते हैं. And then the people down here in the south, they're much more like warm and welcoming, इस हिसाब से. They're more open to it. But of course, yeah, there's a lot of people who do that. And then like especially अगर मैं for example कहूँ कि मैं 5 साल से जर्मनी में हूँ, and Mm. then I still don't I still can't have a conversation in German. At that point, the person will be even more like, okay, like what's the point, right? At least थोड़ा बहुत बंदा learn करे, of course. And if you plan to be here long for a long term, then you definitely should learn it, right? But शुरू Mm. में कहते हैं, at least if you are in a student city and a student environment, तो a lot of it's not that difficult unless you step very far away from the campus area, no? So that's fine. सही सही सही, वेरी नाइस. अब तो आई मीन यू आर इन एकेडेमिया, तुम्हारी वो जॉब भी चल रही है साथ, तो टॉक मी थ्रू कि अब जो जर्मन की जो एक लाइफस्टाइल है वर्सेस जो हमारी पाकिस्तानियों की लाइफस्टाइल है, क्या हमारे में क्या चीज़ तुम्हें लगी कि विच इज़ डिफरेंट? जो जर्मनी के मतलब वहाँ के लोग इस तरह हैं, ठीक है? और दूसरा ये कि वो हाउ आर दे सो मच सो कि इन देयर ऑफिस, इन देयर मतलब कि लीजर टाइम में वो क्या करते हैं, और व्हेन दे आर सीरियस या काम के हवाले से, हाउ आर दे कंपेयर टू अस एज पाकिस्तानीज? I think not just Pakistanis, but like सबके against the biggest thing about what I've seen from Germans is the work-life balance. It's it's perfection in a way. Okay, it's taken so seriously. Like for example, you come in at 9, you leave at 4. Okay, depending on your hours, right? And like in a lot of countries in Asia, it's like, oh, अच्छा बॉस अभी तक बैठा हुआ है, हम नहीं जा सकते ऑफिस से क्योंकि बॉस अभी तक उधर है. या अच्छा मैं ज़्यादा देर बैठूंगा तो यानी मेरे प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, या मैं ऐसे लगेगा कि it's like you do your hours, you do your work, and that's it. और they're very serious. For example, अभी मैंने recently एक किसी को email लिखी, he was away on holidays. It literally said, I'm away on holidays. Any email you have sent me will not be read. Like that's it. It will be just deleted. If it's Mm, urgent, speak to my secretary. Otherwise, email me when I'm back. That's it. Total cutoff. So if you're on mm, holiday, that's it. You're on holiday, you have nothing to do with the office. mm, Period. And then mm, outside of office hours as well. To the point where like some people are literally forced to go back, like check out karo and get the out of the office because I don't want to get in trouble for you being here, mm. right? अच्छा. Overtime and all of that issues. So work-life balance, I think, is the most beautiful thing that I've witnessed here. And in terms of like their holiday, and I think another thing is like they're not too crazy about like savings and stuff. Like they will be like, okay, you just what's it called? You take holidays whenever, and you go have fun, spend the money. That's it. Not too crazy about savings उस हिसाब से. And yeah, but आई थिंक दैट्स द थिंग जो वर्क बाय लाइफ का जो है. एंड मैं खुद अब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. मैं जब गया था मैंने गलत कहा कि आई विल बी अवे, लेकिन अगर कुछ अर्जेंट हो ना तो मैसेज कर देना मुझे, मैं कर दूँगा. दे लाइक नो, यू आर ऑन हॉलीडेज, वी विल नॉट email you at all, we will not disturb you. And I was like, wow, Mm, okay. you mm. know this is absolutely, it was quite nice. सही. आई मीन आई गेस जर्मनी के जो लेबर लॉज भी हैं दे आर आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, तो दे कैंट रियली वो फिर अगर पकड़े जाएं तो फिर दे वुड हैव टू पे रियली लार्ज फाइन, आई गेस इसी तरह ही Exactly, होगा. exactly. Yeah. हाँ. तो मुझे ये बताओ उनका खाना किस तरह का है? Why do you have to ask a question that I do not want to answer? Brother, three things: sausage, cabbage, potatoes. Or just meat, cabbage, potatoes. That's mostly their food. ठीक है? Very क्या कहते हैं, bland, salt,
एंड पेपर यूज़ करते हैं, लेकिन paprika पाउडर इज़ टू स्पाइसी। एक बंदे ने कहा कि लाइक paprika पाउडर जो हम कहते हैं कलर के लिए डालते हैं ना हाँ। फूड, वाज लाइक I usually don't have it, but like if I'm feeling a bit daring, if I'm feeling a bit challenging, then I had add a little bit of paprika. I'm like, what? It's हाँ। very like bad food, but like if you look at it, like it's understandable. It was like if you look at the culture and the history of it, like it makes sense why that's the food, right? You can always get meat, potatoes grow here, and cabbages grow here, right? So उस हिसाब से that became their cuisine. But I हम्म। think उनका काफ़ी जो लंच है ना, लंच टाइम पे इट्स ऑलवेज वेरी सैड। आई थिंक नेदरलैंड्स में भी ये सीन है, और क्या कहते हैं जर्मनी में भी ये सीन है कि लंच टाइम होता है, ठीक है, ऑफिस में सब अपना आते हैं। आई यूजुअली टेक समथिंग लाइक अ पास्ता और लाइक यू नो अ राइस डिश समथिंग लाइक दैट। वो आएगा एक बंदा, एक ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड रखेगा, एक चीज़ का स्लाइस, एक हैम का स्लाइस, एक और ब्रेड का स्लाइस, एंड दैट्स इट। एंड दैट इज सो डिप्रेसिंग। आई हाँ, कांट। मतलब कोई कोई मेयोनीज नहीं, कोई केचप नहीं कि No, भाई आराम से कुछ भी नहीं। dry hot bread. Sorry, ये- but they are very क्या कहते हैं proud of their bread though. यहाँ पे like you go to a bakery, you will have like 90 different options, 90 different types of breads to choose from. That thing I like. I like that. ठीक है, so that's something really nice. And then sausages ज़्यादा इतना try नहीं कर पाया because of course halal issue and stuff. You know, you can't just have a normal bratwurst. ये तुमने अभी 6-7 किया है, मैंने पकड़ लिया तुम्हें। Why, brother? अच्छा, No. हाँ, खैर 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 खैर, हाँ। So I've not really had a chance to try, of course, authentic sausages, but like काफी दफा कहते हैं जब Christmas market वगैरह लगती हैं and everything, there I think there are sometimes these halal vendors. तो तब try किया, it's alright. It's like a better sausage, you know. That's it. हम्म। So nothing too crazy about that. So in terms of like food, अगर देखा जाए तो I think the only thing I would say is bread. They're good at bread. हम्म। तो डू यू मिस पाकिस्तानी कुजीन No, I make it जब bro. तुम मतलब कि वहां पे जब जर्मनी में होते हो तुम? यहाँ यहाँ तो खुद बनाता हूँ। यहाँ क्या कहते हैं अगर ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो तो क्या कहते हैं there's a bunch of restaurants, क्या कहते हैं पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं, तो उधर से ऑर्डर कर लेता हूँ। एंड आई ऑलवेज फाइंड गुड थिंग्स हियर एंड देयर। अभी जब मैं नई सिटी में आया हूँ, आई फाउंड हेवन सेंट, देयर इज़ दिस लाइक चाचा साहब मेकिंग ढाबा स्टाइल चपली कबाब काबली पुलाव, क्या एंड इट्स बात है भाई, लेजेंडरी। क्या ही बात है, टू क्या फाइंड ही दैट बात है। हियर, मैं हर अगले दिन उनके पास गया होता। बट अदर दैन लाइक ऑफ कोर्स मुझे कुकिंग का काफ़ी शौक था, तो आई लर्नड अ लॉट लाइक माई सेल्फ। तो काफ़ी खाने में खुद ही लाइक अगर क्रेविंग हो रही हो मैं बना लेता हूँ, यू नो। नाइस नाइस नाइस। और जो तुम बता रहे हो कि वैसे जर्मनी इन द प्लेसेस यू हैव बीन, वहाँ हलाल ऑप्शंस आर लाइक अवेलेबल, वो आराम से मिल जाते हैं, और डू यू लाइक हैव टू सर्च फॉर देम? अगर आप हलाल ऑप्शंस में वैरायटी चाहते हो तो वो थोड़ा मुश्किल है, बट तो देयर्स टू थिंग्स, ठीक है। एक अगर आप यहाँ पे वीगन और वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, राइट। देयर इज़ लाइक अ बिग बिग पॉपुलेशन ऑफ पीपल हु आर वीगन एंड वेजिटेरियंस, तो आपको वो ऑप्शंस हमेशा मिल जाएंगे। एंड फॉर एग्जांपल जब फास्ट फूड की क्रेविंग होती थी तो आई वुड बर्गर किंग का जो प्लांट बेस्ड यू नो क्या कहते हैं सैंडविच है, इट डजेंट इवन फील लाइक इट्स नॉट चिकन, ठीक है। तो वो फास्ट फूड की क्रेविंग्स वगैरह उस तरह मिल जाती हैं। बट उसके अलावा देर इज़ ऑलवेज वन ऑप्शन दैट यू विल ऑलवेज फाइंड anywhere in Germany, and that's a Turkish doner shop. हम्म। Almost most of them are halal, ठीक है, and so you can always find that option. तो it's not an issue. But personally for me, like कहते हैं at least जिन cities में मैं रहा, they already had like a decent Muslim population, तो halal options are like not an issue इस तरह से। सही सही। बड़ी अच्छी तुमने बात की है अभी कि यू मेंशन द टर्की डोनर जो वहाँ मिलता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू मूव ऑन इज कि बेसिकली वहाँ अगर तुम जर्मनी की थोड़ी एथनिसिटीज़ को तुम स्टडी करो तो यू सी के देयर इज़ क्वाइट अ बिग टर्किश पॉपुलेशन जो वहाँ है आपकी
जर्मनी में, और Yes. कर्दिश भी आपके काफ़ी हैं। तो Mhm. उनका लाइक वो आर दे मोस्टली इमिग्रेंट्स व्हिच केम टू द कंट्री, या उनका क्या मतलब कि दे वर्स पीपल हु फ्लड द वॉर इन सीरिया, आई थिंक सो, वो इस तरह उनका जर्मनी आना हुआ आई गेस। Mhm. At least like from the way the people that I have met, at least कि वो तो कहते हैं at least 1 or 2 generations ना से आए ओके, हैं. That's mostly ओके, what I've ओके। met. उसके अलावा of course कहते हैं काफ़ी new immigrants वगैरह हैं, but like they're like they have their some most of them like that have the German passport, or like they're perfectly fluent in German and the culture and everything. So उस हुँ, हिसाब से I have never seen any like sort of difference in that sense in terms of the सही, demographic. सही, 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 But सही, सही। of always, I always thank them for being here. Because when you had no food and you wanted some chicken or some lamb, they were there to provide halal food for you. नाइस, नाइस। यार बेसिकली एक जो इसका ही कनेक्टिंग एक सवाल ये है कि अब तो जर्मनी में लाइक काफ़ी लोग हैं विच कम फ्रॉम द साउथ एशियन कंट्रीज, जैसे आपका हो गया ये इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, आपके आई थिंक सो बांग्लादेश, श्रीलंका से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। तो जो तुमने लोगों से इंटरेक्ट किया है यहाँ पाकिस्तानी और जो इंडियंस हैं, आई मीन एक तो आई वुड गेस के देयर इज ए वेरी बिगर पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस देयर जर्मनी में, वैसे ही ऐसा ही है। I mean, depends on like I think regions. At least जब मैं ब्रेमेन में था इतना मुझे feel नहीं हुआ. But like for हम्म, example, when I traveled to I think Frankfurt या क्या कहते हैं Köln वगैरह इस तरह की जो cities में, there I noticed uh, big desi population, you know. But हम्म, yeah, there is a lot of people. So सही, सही, सही। और इसी पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस मतलब कि जो वहाँ देसी कम्युनिटी है जर्मनी में, आर दे एक्टिव और लाइक डू दे ऑर्गेनाइज टू हेल्प फॉर अदर पीपल, अगर जैसे फॉर पीपल हु आर इन देयर बैचलर या मास्टर जो कि वहाँ हैं, तो उनको वो मदद कर सकें इन थिंग्स सच एज विद वीज़ा इश्यूज, या विद क्या कहते हैं थिंग्स रिगार्डिंग स्कूल या एडमिन, इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड कोई चीज़ है, या इज़ इट मतलब कि बहुत छोटे स्केल पे ही है, या इज़ इट बिल्कुल नॉट नॉन एग्जिस्टेंट देयर? in terms of like a proper physical association, yes, an organization, I don't know, but there's like a lot of like I think pages or like threads on Reddit or like Facebook, or a lot of people even on Insta. If you might have seen so many reels of people telling like teaching tricks and tips and stuff like that. So there's a lot of उस तरह से helpful वाली चीज़ें. एंड उसके अलावा भी लाइक आई थिंक हर यूनिवर्सिटीज़ में होती है पॉपुलेशन एक ईमेल जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल ईद का टाइम हो गया है या 14 अगस्त वगैरह के टाइम. इस तरह लाइक देयर आर स्मॉल गैदरिंग्स. आई वुडंट से इट्स लाइक अ बिग स्केल थिंग that is like recognized. Everyone picks their points, and some people just look at the reels and follow those people and see what they're suggesting. Some people ask questions on these Facebook pages or Reddit threads, but I think there is like a lot of people willing to help, you know, if you just contact them. हुँ, सही, 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 ठीक हो गया। तो अम अब तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस यू हैव बीन देयर, और तुम ये अपना सारा चीज़ कर रहे हो, तो हाउ हैज़ द जर्मन लाइफ एंड द जर्मन लाइफस्टाइल बीन फॉर यू पर्सनली? तुम्हें किस तरह लगा? ठीक है, और अगेन तुम घर से मतलब दूर हो, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा होम सिक बंदा हो ही जाता है। So how do you like sort of keep a connection या keep in touch with your family members? Like वो तुम किस तरह करते हो in order to get around the feeling of homesickness? Mm. I mean, we at least like I think I talk
almost every single day to my parents. Like हमेशा जब भी कहते हैं ऑफिस से फ्री हुआ, like on the way back I just call them, and then we just talk, oh how was your day, how was your day, keep in touch, oh I'm going to do this now, groceries करने जा रहा हूँ, या laundry करने लगा हूँ, इस तरह की कहते हैं बात वगैरह, just keep in touch. And then every now and then I think like at least once or twice a week कहते हैं the entire family comes on like a video call, and mostly just to see our nephew. That's it. That's the only Mm, reason we are all there on the video call. We don't care about the sister, but just put the nephew on the video call. But we mm, and then we all talk about what's been happening in each other's lives, as हिसाब से. And yeah, the critical point is just to stay in touch every day. I mean, I'm not saying that you should do it every day. It's just like almost works for us, I think, my family at least. But then even if it's like even if it's like 5 minutes, you don't have to be on there for like 1 hour ki call karna, right? But mm, like I'm doing good. I did this today, and what are you doing? Okay, and yeah, okay. Take care. Talk to you tomorrow. Just short and mhm. brief. Stay in touch, and then like yeah, this is done. सही 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 It's सही been going good so far. सही। और तुम्हें जो लाइक जर्मन लाइफ और जो उनका लाइफस्टाइल है, हाउ इज इट बीन फॉर यू पर्सनली? I mean, that has been quite nice. I mean, like I said, I really like जो कहते हैं जिस तरह का work life balance जा रहा है, and then उसके अलावा just like the general infrastructure, the opportunities that you get, and just the day-to-day living just seems like my style in a way, you know, no bullshit. लाइक आई गेस Uh, कि अगर लाइक सोशल सर्कल एक तुम्हारा वहाँ बन जाता है तो इट इज़ हाँ, रियली इजी टू नेविगेट वहाँ पे। exactly. So, I mean, अपनी तीनों universities में like I've been lucky enough to have like a good social group, and अभी कहते हैं जो हैं क्या कहते हैं मेरे दो colleagues, वो दोनों इसी city के locals हैं. So they have अच्छा। been educating me on so much stuff about what's the difference between this city and my previous city, and quite helpful in every situation. Even though, like to the point, I think I might be like one person who just go get who never had this like bad experience with like their landlord or their colleagues or something. I think in that sense, I've been alhamdulillah kafi blessed, to the point where like my landlord was like, Hassan, like if you have any bureaucracy, क्योंकि German is known as the land of bureaucracy, इतने documents वगैरह का होता है, मसले वगैरह. Like if you have anything you want to discuss, just come to me. We will do it all together. I'm like, that's quite nice. इस हिसाब से I think my experience might not be the same for others, but इस हिसाब I've been like quite happy with how things have turned out. Of course, there's challenges always, but I like challenges. नाइस यार, बहुत अच्छी बात है कि यू कीप इन टच। और बहुत अच्छी बात है कि फॉर यू इट हैज़ बीन अ रियली पॉजिटिव एक्सपीरियंस वहाँ जर्मनी जाना और एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। मुझे ये ज़रा बताओ कि अब तुम लाइक पीएचडी कर लोगे जब इंशाल्लाह, और जब तुम्हारा डॉक्टर हसन लिखा हुआ आ जाएगा नाम, ठीक है? तो हाउ डू यू फील जो अभी जॉब मार्केट जारी है जर्मनी की, हाउ इज़ इट फेयरिंग ऑल्सो विद, अगेन मैं वो दोबारा एआई वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन आई हैव टू, क्योंकि हर जगह तो उसकी डिसरप्शन चल रही है। तो हाउ डू यू फील, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द जॉब मार्केट अभी जर्मनी में, ये वो अभी किस तरह चल रही है? Mhm. So, very well, like who says I'm gonna go into the job market? I might just continue in academia postdoc. हम्म। नहीं, I get your point. अगर job market की side पे देखा जाए, I think ये जो research fields है ना, they're still like less impacted. Like आप उससे कुछ भी literature के बारे में पूछो, किसी भी model से, वो कहते हैं अजीब पता नहीं citations देता है, अपने आप से papers बना के दे रहा है. To this day, like you test any model and it's having those issues. तो इस हिसाब से लाइक रिसर्च उस तरह टेक ओवर नहीं किया. लिटरेचर रिव्यूज, हाँ, आप पेपर्स, यू टेक अ बंच ऑफ पेपर्स एंड यू गिव इट टू देम, तो इट हैज़ मेड द रिसर्चर्स जॉब अ बिट ईजियर, बट इट कैन नेवर, लाइक मेन जो चैलेंज क्या आता है, दैट ह्यूमन इंजीन्यूटी, दैट ह्यूमन क्रिएटिवनेस. क्योंकि रिसर्च में आपको क्रिएटिवनेस इन अ वे ही तो चाहिए, राइट? लाइक यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके क्या चीज़ मिसिंग है.
and that capacity is not fully like unlocked, I think, to this day by like AI to take over researchers. So इस हिसाब से like research job market is quite well, but अगर different sides पे देखा जाए, especially in like software, let's not I guess go there, हाँ right? सही है यार नाइस दिस हैज़ बीन मतलब काफ़ी एक अच्छी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट काफ़ी एक तो इनसाइट तेरे मिला कि तुम्हारा एक्सपीरियंस यहाँ पाकिस्तान में और फिर वो जो तुमने अपने अब्बू की बात की थी कि उनका कैसा मतलब पाकिस्तान आना हुआ तो बेसिकली दिस वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन टू यू जो अब तुमने ये सारा एक्सपीरियंस कर लिया है अब इफ समवन इज लाइक कमिंग टू जर्मनी इन सर्च ऑफ जॉब क्योंकि आपका मतलब कि इन सर्च ऑफ अ जॉब या बैचलर्स के लिए मास्टर्स के लिए पीएचडी के लिए आ रहा है व्हाट डू यू थिंक ये उनके लिए इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डू ताकि वो सही वेल इंटीग्रेटेड हो जाए यहाँ जर्मनी में और मोर सो टू फिट इन विद द लाइफस्टाइल और जो एक पीछे एक इमोशनल एक आपको खिंचाव आएगा फ्रॉम लीविंग बिहाइंड फैमिली एंड मतलब स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग बाय योर ओन क्योंकि अगर तुम पाकिस्तानी फैमिली सिस्टम का देखो तो हम मैं अगर अब हम लड़कों की बात करूं तो आई एम सॉरी हम लड़के जो हैं वो बड़े लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि लाड प्यार में होते हैं ठीक है तो वी आर नॉट taught the same life skills as we should be ठीक है तो एक वहाँ जाता है तो एक थोड़ा सा ये फील कि एक डिस्कनेक्ट में भी हो या ना हो आई डोंट नो ये जस्ट मी अज्यूमिंग so what do you think is some of the things that they should know about and what are some of things they should be prepared before going to Germany तो सबसे पहले तो of course कहते हैं, I think the thing that everyone says is have some basics in the language. It's very helpful. ठीक है, आने से पहले, and it just sometimes you will get generally in a better treatment उस हिसाब से भी. दूसरा, like if you're coming for a job, I don't think I would recommend coming without a job offer on a job search visa because that is very risky and you only get it once ever. ठीक है, बट अगर आप मास्टर्स बैचलर्स या इस तरह के लिए किसी के लिए आना चाह रहे हो, ट्रूली अंडरस्टैंड, इन जर्मनी देयर इज नो सच थिंग एज लाइक किस यूनिवर्सिटी का रैंक बेहतर है, राइट? ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर सॉर्ट ऑफ कंसिडर्ड द सेम हेयर. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपने देखना है कि इज दैट यूनिवर्सिटी रियली cater to your field. क्योंकि अब ये ना हो कहते हैं, आप कहते हैं ऐसे यूनिवर्सिटी में चले जाओ जिसमें लाइक 99% जो प्रोफेसर्स हैं वो कहते हैं लॉ के हैं, 1% जो है वो क्या कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस कर रहा है, और आप कह रहे हो हाँ जा रहा हूँ मैं. Like of course it would still be something, but like it's not going to be, the environment is not going to be catered to yourself. I'm not saying don't, Mhm. but remember that is very important to consider, right? और इसके अलावा जब आते हैं कहते हैं लाइफ स्किल्स, आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन. आई हैव सो मेनी लाइक Pakistani friends who I met who didn't know how to like wash his own clothes. He didn't know how to do groceries. कुछ भी नहीं आता, like literally nothing, because like generally everything was done by his mom. And तो वैसे कहता कि like soft skills इस तरह के आने चाहिए. Be prepared to cook your own foods at times. Learn the basics of like how to just live independently in a sense. Budgeting आनी चाहिए क्योंकि a lot of people suffer a lot with that as well. आधे साथ ही like पता नहीं चलता कि पैसे किधर गए हैं, and it's like very important to keep a budget. And yeah, like know that आपको छोटी छोटी tasks करनी पड़ेंगी that you, if you have lived with your family the entire time, that you have never even thought of, right? Especially like अगर आपके घर में for example काम आ रही है ऐसा, like someone comes to clean and stuff, you have never thought about cleaning, you have never thought about laundry. It's not on your mind as an active task. Groceries करने की भी tension नहीं.
So there is all these daily tasks that need to be done, and just be mentally prepared for it. क्योंकि अगर आप पहले नहीं सोचोगे और यहाँ पे आके आपको फिर जब करना पड़ेगा, then you will definitely get overwhelmed. And Mm, that's then you get stuck into this spiral, and it's then very depressing, and then you get even more homesick. So it's more important to have that mindset that, yeah, I will have to do these things, and I should be prepared to do these things. I'm not saying they take some master chef, like, lessons before coming. Like, just mm, know to maybe like fry an egg. That is enough at times. The rest, like, कहते हैं मजबूरी में बंदा सब सीख जाता है, वो mm, होता है. And in terms of like the emotional baggage, it's you need to know that why are you going there, right? आप जा रहे हो to be able to excel, to be able to learn, and to be able to hopefully get a better opportunity. And उस हिसाब से अगर आप कहते हैं आपका वो mindset है, then it sort of hurts less to leave behind your family. Of course, it's always gonna hurt. काफ़ी इमोशनल बैगेज इन्वॉल्व होगी, बट इट्स फॉर द बेटर फ्यूचर, यू नो. सही है भाई। Um, this has been a really good podcast. I mean, definitely a break जो मैं ये करता था ना, ये फास्ट ए आई जॉब, फास्ट ए आई जॉब, वो उसके जो एक चीज़ है उससे मैं निकलना चाह रहा था विद दिस। तो आई वांटेड कि एक थोड़ी डिफरेंट हो, वेयर ये ही एक फॉर्मेट ना एक चल रहा हो। तो हाँ यार, अगेन थैंक यू हसन फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। ऑलवेज अ प्लेजर थैंक यू टू सो हेल्प मच यू, मतलब कि फॉर हाँ, इनवाइटिंग मी. हाँ, मतलब कि एज अ फॉर्मर पॉडकास्टर ऑफ दिस पॉडकास्ट, तो हाँ, बड़ा अच्छा लगा जनरली तुम आए। तो हाँ, आई Very मीन refreshed. Uh, Definitely, thank you so much for inviting me. Um, Hopefully, might be back later. I don't know. Hmm? इंशाल्लाह, आई मीन मैं क्या कहते हैं, फोर्स नहीं करूँगा, अगर हुआ तो इंशाल्लाह हो जाएगा, Inshallah. इंशाल्लाह। But, yeah. तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द दानी जे पॉडकास्ट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।